Good morning, students. Today we will discuss chapter 4. Yes, let's start our chapter 4. Animals are friends. Okay, let's start. Yes, all of us know that animals played a very important role in the life of human beings. All of us know that. Yes, animals like dogs, cats, and parrots as pets. Okay, we have these animals as pets. Okay, and many product we use many product like milk, cheese, honey, eggs, and meat as a food. Okay, these are also obtained from the animals. Okay, next, horses, oxen are also used as draught animals to draw their wagons and carts. Clear it? And assist the farmer in their fields. All of us clear that. Next, yes, here are some other animals which are also helpful to human beings. Let us discuss them. First of all, we discuss silkworm and sheep. Here we know about silk and wool that are used for making clothes. Okay, where does it come from? It come from silkworm and sheep. Okay, silk is come from silkworm and wool is come from sheep. Clear it? Next is leather which is obtained from the skin of animals like goat, sheep, and buffalo. Okay, is used to make shoes, purses, or bags. Clear it? Third is pearls. Pearls, which is used as jewelry, are obtained from oysters. Clear it? Next, many types of fish, prawns, and crabs are also used as seafood. Clear it? Fourth point is animals like horses, camels, elephant are used as means of transport. Clear it? And dogs are used in search operation. How they used in search operation? They assist police in various search operations. Clear it? And last one is animal waste like cow dung is converted into compost, and that compost make the soil fertile for growth of plants. Okay, next is wildlife. What is wildlife? Wildlife includes all those plants and animals that live and grow in their natural surrounding. क्या क्या इंक्लूड होता है वाइल्ड लाइफ में? वो सभी प्लांट्स और एनिमल्स जो कहाँ पे ग्रो करते हैं, कहाँ रहते हैं, इन देयर नेचुरल surroundings. All of us clear that? Let us highlight this. Wildlife. What is wildlife? Definition of wildlife is wildlife includes all those plants and animals that live and grow in their natural surrounding. Yes, wildlife is found everywhere. Okay, in plains, in rivers, in mountains, in seas, in rainforest, in deserts. Okay, yes, as human beings are destroying the natural surroundings of these animals by cutting down trees. Okay, by cutting down forest or by polluting the rivers. Clear it? So here are two reasons which are responsible
for the destruction of these natural surroundings of wild animals. Clear it? First is by cutting down forest and second is by polluting rivers. Let us underline this: by cutting down forest and by polluting rivers. Clear it? Due to this, some of the wild animals are increasingly becoming extinct. Okay, here the term is extinct. What are extinct animal? Extinct animals are those animal species which are no longer living. Okay, extinct animal ऐसे एनिमल हैं वो जो अब इस अर्थ पर नहीं हैं, नहीं जीते, ख़त्म हो चुके हैं. पहले थे पर अब नहीं हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक डायनासोर्स. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल. यू ऑल ऑफ अस नो दैट these are extinct species because they are exist in the previous time but at present time they doesn't exist. Okay, let us underline this definition. Extinct animals are those animal species which are no longer living. Clear it? And their examples, here few examples are given. First is Tasmanian tiger, quagga, passenger pigeon, golden toad and Caribbean monk. Clear it? And next term is endangered animals. These two terms are very important, so listen carefully. Second term is endangered animals. What are endangered animals? Endangered animals are those species which are in danger of becoming extinct, जो अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी हैं इस लाइफ, इस अर्थ पे, पर लेकिन इतने कम रह गए हैं वो कि अगर ऐसे ही ह्यूमन की जो डिस्ट्रक्शंस हैं उस करता रहेगा, अपना वो डिस्ट्रॉय करता रहेगा, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, वो भी इस अर्थ पे नहीं बचेंगे. ओके, क्लियर इट? लेट अस अंडरलाइन दिस. एंडेंजर्ड एनिमल्स आर दोज animal species that are in danger of becoming extinct. Clear it? What are extinct? Extinct animals are those which are no longer living, जो इस अर्थ पर है ही नहीं, अब ख़त्म हो चुके हैं. पहले थे बट अब नहीं हैं. ओके, एंड जो endangered animals हैं वो खतरे में हैं एक्सटिंक्ट होने के. ओके, उनको खतरा है कि वो ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स अफ्रीकन एलिफेंट, Bactrian camel, bald eagle, golden lion and tamarin and panda. Clear it? Next, one important point is one of the famous wildlife sanctuary, world famous wildlife sanctuary, which is Kenya Masai Mara, is recently added to 7 wonders of the natural world. Clear it? Remember it? Kenya's Masai Mara, one of the world famous wildlife sanctuary, was recently added in the 7 wonders of the world. Let us underline this line. Okay, next, what is here, next topic is dangers of wildlife trade. Okay, first of all we have to clear about the meaning of wildlife trade. What is wildlife trade? Okay, wildlife trade is a trade in which animals are killed because their body parts are used by humans. Okay, this is known as wildlife trade. Let us underline this. In which animals are killed because their body parts are used by human. Okay, this is known as wildlife trade. अब पूरा टॉपिक, फुल टॉपिक क्या है हमारा? डेंजर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेड. क्लियर इट? अब वाइल्ड लाइफ ट्रेड तो हमें पता चल गया क्या होता है, पर ये डेंजर्स क्या हैं, उस पर क्यों है वो डेंजर में. वाई वाइल्ड लाइफ इज़ इन डेंजर? ओके, वाइल्ड लाइफ इज़ इन डेंजर बिकॉज many illegal hunting or poaching activities are
अकर डे बाय डे। क्या हो रहा है, एनिमल्स जो ह्यूमंस हैं वो उनको अपने फ़ायदे के लिए किल कर रहा है ना एनिमल्स को, तो इसीलिए वाइल्ड लाइफ ट्रेड होती है, क्योंकि एनिमल्स अपने फ़ायदे के लिए उसे किल करता है। ठीक है, तो धीरे धीरे अगर वो वहाँ से मारता रहेगा, ऐसे ही हंटिंग करता रहेगा उनकी, तो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। क्लियर इट। एंड अब इसने ये तो बोला कि वो अपने फ़ायदे के लिए उसको हंट कर रहा है। वट आर दीज एडवांटेजेस, वो कौन से फ़ायदे हैं, ऐसा क्या मिलता है उसको उससे कि जो वो उसको किल करता है। फर्स्ट थिंग इज़ एनिमल्स, फर्स्ट एनिमल इज़ एलिफेंट। वाई एलिफेंट आर हंटेड, क्यों एलिफेंट को हंट किया जाता है, फॉर देयर टस्क, बिकॉज एलिफेंट आर हंटेड फॉर देयर टस्क। ठीक है, अब टस्क से क्या होता है, टस्क का एक और नेम है अल्टरनेट आइवियोरी। ओके, टस्क और आइवियोरी इज यूज टू मेक ज्वेलरी और डेकोरेशन पर्पस। क्लियर इट। नेक्स्ट, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन bears, they are killed for what, their gallbladder. Okay, American bears are killed for their gallbladder. ठीक है, वो किस में यूज होता है, दे आर यूज टू मेक मेडिसिन। क्लियर इट। एंड लास्ट इज रिनोसोरस, दे आर स्लॉटर्ड फॉर देयर हॉर्न्स। क्लियर इट, वो उनके हॉर्न्स की वजह से स्लॉटरिंग होती है उनकी। उनसे क्या बनता है, उसको उन हॉर्न्स को पाउडर फॉर्म में ग्राइंड करके और हम क्या बनाते हैं उनसे, मेडिसिन। क्लियर इट। नेक्स्ट इज मस्क डियर। ओके, मस्क डियर इज बिकमिंग एक्सटिंक्ट, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया है, हो रहा है ना ख़त्म, अब तो है ही नहीं, वो मिलता ही नहीं है। पहले किसी ने हिंदी में सुना होगा मृग हिरण, सुना ना, वो किस लिए यूज़ होता था, वो अब है ही नहीं, मिलता ही नहीं है, ख़त्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो गया है। क्यों हंट किया जाता था, वो कस्तूरी, उसके अंदर से क्या ऑब्टेन होता था, कस्तूरी। ठीक है, जो किस में यूज़ होती थी, परफ्यूम्स के लिए, परफ्यूम्स बनाते थे उससे हम। ठीक है, माउंटेन गोट जो पहाड़ों पे मिलती है, वो किस लिए हंट की जाती है, दे आर हंटेड फॉर फेमस वूल नेम्ड एज पश्मीना वूल, जो पश्मीना जिसे शॉल्स बनती हैं उस वूल से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है वो, फेमस भी है। और क्लियर इट। एंड टाइगर्स आर हंटेड फॉर देयर बोन्स, टीथ, claws, because their teeth and claws are worn as jewelry by making superstitious person। ऐसे बोल देते हैं कि ये गुड लक होता है। आप अगर आप जो टाइगर है उसका दांत पहन लो या उसका क्लॉ पहन लो तो उससे क्या होता है, वो गुड लक होता है, अच्छा रहता है। ठीक है। एंड legs of fawn are eaten because they are considered to be a delicacy. Next is caviar, they are also a important costly delicacy and is made from unfertilized eggs from a variety of fish. Okay, they all are, due to these reasons animals are hunted. Okay, and wildlife is in danger. Clear it. Sorry. Protection of wildlife. How we protect our wildlife, our government take many actions. First action is our government enacted an act named as Wildlife Protection Act in 1972. Let us underline this. And what was the objective behind this act? Effectively controlling poaching and illegal trade in wildlife, to control the illegal trade. Okay. Yes, this act has been amended in January 2003. Okay, amended in 2003 means इस एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए थे, क्या, इन जनवरी 2003 में. Okay, what was these changes? Penalty and punishment for offense under this act has been made more stringent. These are the changes. Clear it? कर लोगे? Yes. Next
part of this chapter we will discuss in next video. Clear it?